Bismillahirrahmanirrahim. Now we'll be starting up a new topic right now, that is the data description. Now, up till now, what we have learned about the data is that we have talked about the ways how the data is or the quantitative evidences are being collected to answer any research query. We talked about the methods in form of the collection of knowledge, existing knowledge in terms of various sampling methods. देन ये काइंडली आईफोन एंटर्ड वाले से जो है हमारे पास कोई खास फायदा नहीं है एंटर होने का, प्लीज अपने नाम से एंटर होइए और Ma'am, he's a foreign student. He just joined last week, maybe. ओके नाम तो होगा ना बेटा, फॉरेन बेशक है लेकिन कोई नाम तो होगा. إني لله يا ناقب سوا. Okay. um, So what we have talked up till now for under this course, we have talked about the methods of collection, the methods of collection of data in terms of the existing knowledge collection, that is by using various sampling methods, and then we have been talking about the generation of data in forms of experimental design for answering any queries, and then we identified or we discussed the methods after having the collection of data set. We talked about the structure in form of the presentation of data sets. That is the first step of handling of any data set, that we attempt to present the data set in some appropriate manner. Two main tools are being used in form of the graphical structure and the uh, mm, tabular arrangement. Tabular arrangements are done in form of frequency distributions for qualitative as well as quantitative data set, and the graphical representation is as well as done for qualitative and the quantitative variable, but this is done obviously on the basis of the type of the variable. We use different tools for it. Up till now we have talked about the data collection and presentations. Now the third step of handling of data is for the data description, where we identify or extract the main knowledge or main information contained in the data set. And the first step is to look at the we basically look at 3 or 4 main questions from the data set. Number one, we intend to identify where lies the center of the data, that is how the cluster of observations are, how the most observations are behaving. That is being answered by looking at the question that where lies the center of the data set. That is being answered by looking at the measure of central tendencies. Then we look at the how much is the spread of the data set, and that spread is being answered by looking at the measures of dispersion for the data set. Then we look at how is the shape of the data set, if it is symmetric or skewed, if it has a single peak or it has more than one peak, etc. That is done in form of using the various tools for identifying the shape of the distribution. And finally, we look at are there any gaps or notorious observations or outlying observations. These are the 4 main questions that comprises of the whole data description. We'll start with the first one right now, that we'll be looking at the uh, data description in form of the calculation of numerical summary measures of the data set. For here, we'll be using few characteristic and for identifying the formulas only for the sake of applications. ठीक, और इस पर्पस के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल समरी मेजर्स हैं जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उनके लिए हम जो टूल्स यूज करेंगे, उनके लिए हम अपने डाटा सेट को फॉर्मली लेबल कर लेते हैं एज इफ दे कंप्राइज ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी लेबल्ड एज x1 x2 xn के. हम प्रैक्टिकली डाटा सेट देख रहे होंगे तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होंगी एट हैंड and we'll be handling them, लेकिन just to link with the observations with the formula, so आप ये समझ लें कि हमारे पास जो नोटेशनल प्रेजेंटेशन है इसकी, वो नोटेशनल प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास क्या हो जाती है कि हम x1 x2
अब टिल एक्सएन की फॉर्म में हमारे पास जो ऑब्जर्व डाटा सेट है उसको हम हैंडल कर रहे होते हैं या उसको हम लेकर चल रहे होते हैं, ठीक। एंड देन वील बी लुकिंग एट वेरियस फीचर्स और वेरियस फोकस पॉइंट्स ऑफ द डाटा सेट. Now, the first question or the first exploration points are the measures of center or the measures of central tendency. Our main objective for these tools are to identify or to calculate the summary of the data set, and we'll be using 3 or 4 main tools here. Number one, we'll be using as the mean, the median, and the mode. Mid range is commonly not being focused too much. मैं इसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा emphasize रखूंगी just to have a knowledge of it, लेकिन इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रख रही हूँ. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम किसी भी एक डाटा सेट में कोई एक ही टूल यूज करते हैं. इनमें से आमतौर पर हमारा इंटरेस्ट ये दोनों तीनों चारों टूल्स इकट्ठे यूज करना नहीं होता. दैट इज फॉर while handling any data set in real world, we'll be focusing only one of these features. That is enough to have them. But to learn here how these features behave, we'll be working them together with for the same data set. We'll be looking at them at the same time. But at the end of this chapter or this section, I'll be identifying when which tool can be used more appropriately and which tool is more beneficial in which situations. ठीक. सो पहले हम समझ लेते हैं, हम लर्न कर लेते हैं कि ये हैं क्या, और उसके बाद जो है हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे या इनको हम जो है वो लर्न कर लेंगे कि हमारे पास इनको किस फॉर्म में या किस तरह से हम इनको किस किस डाटा सेट के किस फीचर्स पे यूज कर रहे हैं. समझ प्लीज अपना माइक ऑफ करिएगा. ठीक है. So let's move onwards with it. So we'll be starting with the first one, that is the mean. When we call the mean, we refer to the arithmetic mean, or it is commonly called as the average of the data set as well. मेधा, आप सिर्फ इस वाले चंक में आई हैं, पूरी क्लास में तो नहीं थी हमारे पास इससे पहले. अच्छा, मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं, मेनली ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला कंप्राइज करता है कि हम सारी की सारी वैल्यूज या सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड कर लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन. That is, we include all the observation, all the information contained in each and every observations by adding them all, or we take sum of these all observations and then divide them by the number of observations. ठीक. So arithmetic mean is calculated just by summing up all observations and dividing them with the number of observations. यहाँ हमारे पास जो है जो सैम्पल मीन, और हमने, आपको याद हो तो हमने पहले भी इस पे बात की हुई थी कि हम क्योंकि सैम्पल डाटा यूज कर रहे होते हैं तो हम जो भी कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास जो सैम्पल पैरामीटर या सैम्पल स्टैटिस्टिक्स कहला रहा होगा. और अगर हम पॉपुलेशन के डाटा सेट पर कर सकते होते, क्योंकि पॉपुलेशन डाटा तो है ही नहीं, लेकिन अगर हम उसको कवर कर सकते होते और अगर हम उससे कैलकुलेट करते हैं तो वी कॉल देम as the population parameter. Since we don't have them, so we use the sample information, we calculate the same thing from the sample data and use it as the estimator for the unknown population parameter. So for the calculation of these observations, we just differentiate them while we are talking about the sample statistics, that is sample mean, sample median, sample mode, etc. सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल वेरिएंसेस, हम उनको अलग नोटेशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और जो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स के होते हैं जो कि अननोन क्वांटिटीज रहती हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं just by the Greek letters notation are being used. Obviously they remain unknown always. So the arithmetic mean, or simply the mean when calculated from the sample data, is denoted by x bar, and it is basically sum of all observations divided by the number of observations, where small n shows the number of observations included in the sample or at the data at hand, and sum of observations is denoted by the sum of xi, where the summation sign is denoted by the Greek letter सिग्मा से हम आइडेंटिफाई कर देते हैं इसको. ठीक. आई होप कि ये किसी के लिए परेशान करने वाली नोटेशंस नहीं है और इसमें आपको कोई खास मसला नहीं हो रहा है. फिर हम इसको कैलकुलेट कैसे कर लेते हैं. जो अभी हमने सम ऑफ एक्स आई लिखा, दिस इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दिस इज द सैंपल मीन. Had it been the case कि we had the population observations, तो हम sum of all observations across the whole population कर लेते और उससे उसको डिवाइडेड बाय n करते हैं, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन मीन आता उसको हम
ग्रीक लेटर म्यू से आइडेंटिफाई करते हैं, बट सिंस द पॉपुलेशन डाटा सेट इज अननोन तो ये अननोन ही रहता है। अब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसमें से परेशान नहीं होना। हम हर दफा जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो जो अवेलेबल डाटा सेट के साथ वर्किंग कर रहे होंगे वो हम हर बार एक्स बार ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। So now let's have an idea कि हम करते क्या है। We just add up all observations. If you have your calculators with you, you can redo this example that add 54.9 to 326.4, 123.0, 90.0, 111.9, 70.7, 87.3, 657.6, 289.5. That is, we add up all observations. The sum appears to be 1811.3 and we divide it by the number of observations. Count these observations. We have 9 observations here. So we have divided them, the sum, by the number of observations. This has given us the numerical value of the mean or the sample mean denoted by x bar as 201.6. Now one thing that I want you to focus here is that 201.6.26 is not a value located anywhere in our data set. So we can learn from here is that mean is the indicator that where the cluster lies. ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्लस्टर क्या ऑब्जर्वेशंस कहाँ किस पॉइंट के इर्द गिर्द लाई कर रही हैं उसको शो करने के लिए यूज होता है। दिस मे और मे नॉट बी द एग्जैक्ट डाटा पॉइंट फ्रॉम आवर डाटा सेट। ये एग्जैक्टली डाटा में लोकेट होना जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे पास एक एवरेज लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि इस वैल्यू के अराउंड हमारे पास जो है डाटा का क्लस्टर लाई कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इस वक्त फॉर दिस डाटा सेट इट अपीयर्स टू बी 201.26, दैट इज द मीन वैल्यू। Similarly, do it quickly for you all. ऐड करेंगे जरा जल्दी से सारी की सारी values. Now we have 5-year periods, system wide sales available in millions of US dollars, and find the mean. Hurry up, calculate the mean. That we'll be doing is that we would be adding all these observations. That is, we'll be summing up 221 plus 239 plus 262 plus the remaining two, 281 and 318, and we'll be having them as the divided by the x bar value. जरा जल्दी से करेंगे। 221 plus 239 plus 262 plus 281 plus 318 and divide them. We have 5 observations with us, so we would be dividing this sum by by 5. तो आपके पास x बार का जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन x ओवर n क्या दे देता है वैल्यू? जी जनाब जल्दी से बताइए क्या 264.2. 264.2 it appears to be. Now look here once again, 264.2 is not exactly the data point available in the data set, but it is indicating us that we have a data or point or around which all observations are clustered. Am I clear to all? Yes, ma'am. This is what they have done. Yes. So the mean amount or the sales basically tells us कि हमारे पास डाटा का सेंटर पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट कहाँ आ रहा होता है। Now let's calculate the mean for the group data set. Mean for the group data set refers to the cases where we had the frequency distribution in class intervals forms. Just recall कि हमारे पास group data किस form में आ जाता है? We have group data in form of frequency distribution. So what we have is we have a column for all classes. Then in the frequency distribution we have a column for frequencies. What we do, we add up 2 more columns to calculate the x bar or sample mean for the group data set. We calculate the midpoints of each class. It's exactly the same midpoints that we just talked about the during the construction of polygons. हमने polygon के लिए midpoints calculate किए थे ना, हम exactly वही midpoints यहाँ भी calculate करेंगे. That is, we'll be adding up the upper class boundary and the lower class boundary of a class and dividing them by 2. Then we'll be repeating the whole process for all classes in the frequency table. So we'll be getting the column of midpoints. Now these midpoints are supposed to be the representative values for each class. ठीक है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि हमारी
जो एक किसी भी क्लास में जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, लेट्स सपोज 2 ऑब्जर्वेशंस थी, तो वो हम ये सपोज करें दोनों की दोनों वैल्यूज मिड पॉइंट के इक्वल है। अगर 10 ऑब्जर्वेशन आ रही थी तो बेशक एक्चुअल डाटा में वो फर्क थी, लेकिन हमने यहाँ सपोज कर लिया बाय कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट के वो सारी की सारी वैल्यूज जो कि फ्रीक्वेंसी के में आ रही थी वो एक्चुअली इस क्लास के अंदर मिड पॉइंट के इक्वल है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन एंड कन्वीनियंस, एंड देन we multiply the column of midpoints, that is the column C being noted here, and the frequencies for each successive row, and calculate a column of their product that is labeled as f into x or frequency into midpoint, and sum up that column after doing the calculations for each of the row in the frequency table. This gives us the sum of all observations for the group data set that is to be placed in the numerator for the formula of x bar, and then we divide them by the total number of observations. In a frequency data set and a frequency distribution, we can get the sum of observations by calculating the total of the frequency column. उर्दू में बता देती हूँ ये सारी की सारी बात कि हमने किया ये कि हम जब पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ होता है उसमें हमने सबसे पहले मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए जो कि अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड करके लेके आए थे। वहां से सारे का सारा कॉलम जब कंस्ट्रक्ट हो गया तो इन मिड पॉइंट से हमने हर क्लास की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम जनरेट कर लेना है जो कि हमारे पास आ जाता है कॉलम ऑफ एफ इंटू एक्स के। ठीक है, ये कॉलम हमें आइडेंटिफाई करके दे देता है कि हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या बन रही हैं। ये जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हैं ये हम यूज कर लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द न्यूमरेटर इन द एक्स बार फॉर्मूला, जो कि समेशन एफ एक्स के इसका टोटल जो है वो न्यूमरेटर के तौर पे यूज होता है। डिवाइड कर लेते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस के। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हम समेशन एफ या कॉलम बी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Look here, for this data set we are having the class boundaries already being made in the form of classes already being made in the form of class boundaries, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर दो कॉलम्स ऐड कर देंगे। वन वुड बी द कॉलम ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, जिसको आप अपनी आसानी के लिए बेशक एक्स आई से या एक्स से लेबल कर दें, और मैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम को अपनी आसानी के लिए एफ से आइडेंटिफाई कर देती हूँ। नाउ डू इट फॉर मी, कैलकुलेट add up 20.5 and 15.5 and divide them for by 2। क्या आ जाता है, जरा 20.5 को प्लस कर दें 15.5 पे और इसको डिवाइड कर दें, जो सम आपके पास आ रहा है divided by 2 18 36 आ गया ये। और इसको अब हमने कहा कि हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो आपके पास फर्स्ट मिड पॉइंट आ रहा है 18। सिमिलरली नेक्स्ट वाले के लिए जरा वर्किंग करेंगे, 20.5 प्लस 25.5, दिस 46 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 23। 23। So now we have the midpoints in the form of, now we'll be having it as 28 and 33 and we'll be having 48 if I'm not wrong, verify कर लीजिएगा। And now we'll be calculating a column of f into x, that is multiply 13 with 18, the answer would be this column's result 234 234 यहाँ या similarly take multiplication of 23 into 6 138 138, then we have 28 into 4 112 33 into 1 48 into 1 and add them all। ये जो है मेरे पास रिजल्ट करेगा समेशन एफ एक्स के, क्या आ जाता है 565 सॉरी 565 565 आ गया। Now we will be calculating x bar for the formula summation fx over summation fk। ठीक, actual formula was x bar as summation x over n sum of all observations। अब frequency table में तो actual observations नहीं given थी frequency distribution में, तो what we did it we calculated summation x के बजाय हमने summation fx calculate कर लिया, which appears to be 565 divided by the sum of observation। Sum of observation is now calculated as summation f, मैम calculate कर लेते हैं as 25 और summation f। तो now 22.6 क्या आ गया 22.6
22.6. Now look here, 22.6 is something that is being located into the second class. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ हमारे पास x बार लोकेट हो रहा है ना 22.6. सो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है या क्लस्टर ऑफ डाटा आ रहा है वो सेकंड क्लास में लाए कर रहा है. एक चीज छोटी सी नोट करिएगा, मैंने इसलिए ही खासतौर पे स्लाइड चेंज नहीं की ताकि आपको आइडेंटिफाई करके दिखा सकूं एक चीज कि यहाँ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर लोकेट कर रही होती विदाउट लुकिंग एट द डाटा तो फिर तो वो मेरे पास थर्ड रो में आना चाहिए था 25.5 से 30.5 तक. लेकिन अरिथमेटिक मीन क्या देख रहा था, ऑब्जर्वेशंस की एक्चुअल वैल्यूज को ऐड करके कैलकुलेट हुआ था, where the 13 observations or the cluster of observation was from the first class. Therefore हमारा मीन जो है वो उस क्लस्टर की साइड पर शिफ्ट हो गया है और अब आपको नजर आ रहा है कि मीन जो क्लास जिसमें लोकेट हो रहा है वो थर्ड नहीं बल्कि सेकंड क्लास में लोकेट होता हुआ नजर आ रहा है. एम आई क्लियर? Ma'am, तो I have a question here. एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड में बात पूरी कर सकती हूँ कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो मेनली क्या है, सेंटर पॉइंट ऑफ द क्लस्टर ऑफ डाटा को शो कर रहा होता है. इसलिए उसका फिजिकली सेंटर में होना जरूरी नहीं है डाटा के, बल्कि वो जो डाटा का क्लस्टर है उसका सेंटर पॉइंट या उसका क्लस्टर पॉइंट दे रहा होता है. जी क्या सर, अब पूछ लीजिए आप बात. Ma'am, ये midpoint 48, I think this is typo, maybe it is 38. सॉरी 38, इट्स 38 एंड डू द कैलकुलेशन. अब आपके पास करेक्टेड चीज आ जाएगी. ठीक है, इट वुड बी आई थिंक 555. 5, sorry मेरा marker is not right in here, it would be 555 and hence the 25 का डिवीजन चेक कर लें क्या आ जाता है. 22.2. सॉरी 22.2. 0.2 आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये इसी वाली रेंज में लाए कर रहा है. हमारे करेक्शन से उसमें कोई खास वो नहीं आया है, फर्क पड़ गया. ठीक है, बात मेरी समझ में यहाँ पे क्या चीज है कि अरिथमेटिक मीन किस तरह लोकेट हो रहा है और अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन क्या आ रही है. यहाँ तक क्लियर है? हम आगे चलें. 22.2 और ये सेकंड वाला नहीं समझ आया कि 22.2 से 6 से कैसे क्या बता रहा है बेसिकली आपको. हम ये बता रहे थे, अभी आगे चलती हूँ तो आपको वहां से दोबारा बता देती हूँ कि कैलकुलेशन कैसे हुई और ये वाली ओके. बात में दोबारा भी फोकस कर लेती हूँ. हमने क्या किया, इस पे कैलकुलेशंस कर लिए. नॉट्स क्वाइट बिग, लेट मी जस्ट स्क्वीज इट अ बिट ताकि आपको ये नजर आ सके. हमने अब कहा कि हम इस पे ये मिड पॉइंट और इसकी कैलकुलेशंस करेंगे एंड फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज we are calculating it by calculating the midpoints, that is adding up the two upper and the lower boundary of the class, dividing them by 2, so we are getting the values as 18 and 23. You have already done the exercise, and then after these midpoints being multiplied we get the sums 555 और अब हमने उसके लिए अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया, दैट अपीयर्स टू बी 22.2. मैंने यहाँ ये आइडेंटिफाई किया कि अरिथमेटिक मीन जो है, जो बात मैं अभी कुछ देर पहले बता के हटी थी वो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज hear it carefully, कि ये हमने सिर्फ ये बताया कि अरिथमेटिक मीन, नाउ लुक एट द डाटा सेट, x बार 22.2 की वैल्यू जो है हमारे पास वो फिजिकली सेंटर ऑफ द डाटा में लाई नहीं कर रही, यानी वो हमारे पास जो है इस वक्त ये थर्ड वाली, अगर मैं फिजिकल सेंटर देख रही होती तो उसको तो यहाँ कहीं इस थर्ड वाली रो में लाई कर देना चाहिए था, ऊपर की दो रो और नीचे की दो रो छोड़कर. तो मैं ये बता रही हूँ कि वो फिजिकल सेंटर होना जरूरी नहीं है उसका अरिथमेटिक मीन का, बल्कि अरिथमेटिक मीन क्या देख रहा था, आपके डाटा का क्लस्टर देख रहा था, सिंस 13 ऑब्जर्वेशंस और मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वर फ्रॉम द फर्स्ट क्लास. तो अरिथमेटिक मीन यहाँ पे कहीं एक्स बार लोकेट कर रहा है. सो एक्स बार मेनली फोकसेस और फॉलोज दी डाटा क्लस्टर जैसे, और इसीलिए हमने इसके लिए इसकी डेफिनेशन की थी कि हमने बताया था कि इट लोकेट्स द सेंटर और क्लस्टर ऑफ द डाटा सेट, कि वो किस तरह से कहाँ लोकेट करे उसको वो फोकस करके बताता है. तो उसके लिए फिजिकली सेंटर होना डाटा का जरूरी नहीं है. अरिथमेटिक मीन जो है वो फिजिकल सेंटर नहीं बता रहा होता, बल्कि वो डाटा के क्लस्टर में सेंटर कहाँ है या क्लस्टर कहाँ लाया कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है. एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ये ज्यादा आपको अभी जब हम मीडियन पढ़ेंगे तो आपको इसका फर्क भी समझ में आ जाएगा. यानी 25 की जो टोटल है उसमें से 13 एक तरफ है तो 12, यानी कि मीन समवेयर लाइक 12 12 के बीच में है मतलब. यानी उन 13 ऑब्जर्वेशंस का जो चंक था उस चंक ने अपनी तरफ उनको ड्रैग किया था या उनका की प्रेजेंटेशन वो कर रहा था यहाँ पे. ठीक है. ठीक है, नाउ द सेकंड ऑपरेटर इज मीडियन.
Median basically locates the physical center of the data set. It has nothing to do with the actual face values of the observations. It just head counts the observations and mark the physical center of the data set. The values or the observations may be large or may be small, but the median identifies the midpoint in the arranged data set. It is being denoted by MD for this book, and in many other books it is denoted by the sample median is denoted by X tilde, that is एक्स टिल्डा से आइडेंटिफाई करते हैं. मीन हमने आइडेंटिफाई किया था एक्स बार से और इसको एक्स टिल्डा से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने बस एमडी से यानी मीडियन से आइडेंटिफाई किया हुआ है. सो अब बता से इसलिए दिया कि अगर कहीं और नोटेशंस देखें किसी और बुक में तो परेशान ना हो जाइएगा. The process of calculation of median comprises of by arranging the values in ascending order, then we head count the observations and identify the center point of the data set. In case of odd observations, the location of this center point is very convenient, that we leave half of the observations above and half of the observations below, and the centermost data point is exactly located as the median value. While in case of even number of observations, when we split the data set in two equal halves, the center point is left with no data point exactly. So what we do is we use the two middle values and add them up and divide them by the by 2, and this will give us the median. Let's do it from this observations. हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, मीडियन फिजिकल सेंटर को कैलकुलेट कर रहा है, यानी हम इसका को फिजिकली लोकेट करते हैं सेंटर पॉइंट को. उसके लिए क्या करेंगे, डाटा सेट को अरेंज कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू है 148, फिर आ रही है 155, फिर आ रही है, अच्छा जी हमारे पास फिर से 10 मिनट्स में खत्म हो जाएगी, एंड वील बी ज्वाइनिंग बैक अगेन for finishing off this topic as well, so don't go away. We'll be arranging it in the ascending order, that is 148, 155, then we have 180, 184, 186, 203 and 241. I hope no observation is left here. Now for the center value, कितनी observation है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 observation है. 3 from here, 3 from here are left. Sorry, it's not writing. And what we are left? We are left with the center value. This is our median observation. Am I clear? For the odd observations, for the case of odd observations, calculation of median is very convenient. What we do is we just arrange the observations, and then we mark the center point of the data set. In case of even observations, the median is calculated by once again arranging the data set in ascending order. Look here for this data set here. हमारे पास once again we'll be arranging. We have observation as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 observations. What we did is we first of all arranged them in ascending order. The lowest or the smallest value was 656, followed by 684, 702, 764, 856, and the remaining 3 observations in the ascending order. Then we counted them, half of the observations left, that is the total of 8 observations. When we are left here, हमारे पास 1, 2, 3, 4 राइट हैंड साइड पे रह गई, 1, 2, 3, 4 लेफ्ट हैंड साइड पे रह गई. तो सेंटर में कोई वैल्यू नहीं आ रही थी. व्हाट वी डू, we calculate the median by considering the central two values, that is we looked at 764 and 856 and then add them up, divide them by 2. So हमारे पास 1620 divided by 2, 810 is the median for the even observations के. बात यहाँ तक की समझ में आई हमने कैसे कैलकुलेट किया? Any questions up till this point? Am I clear to everyone? Okay. No answer means everything is clear. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now the third is the mode. Mode is calculated as the most frequent observation. Ma'am, of the one data set. thing. Excuse me, Sorry? ma'am. Yes, कैसे? One question. Yes, yes, yes. मैम ये
मीडियन हम ग्रुप डाटा के लिए नहीं कैलकुलेट करते मीडियन। करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो टेक्निकली थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है और आपके पास उन्होंने इस तरह से इतना हाई फोकस नहीं बताया हुआ। वो मैं आपको ये सारे के एंड पर बता देती हूँ एज एन एडिशनल फॉर्मूला। ठीक है, और जो है वो आपका जो चैप्टर है उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करके नहीं बताया, सिर्फ एक्सरसाइज में उसको फोकस किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको अलग से नहीं बताया। उसको हम कैलकुलेट करते हैं, बट दैट इज अ फॉर्मूला जो आपको थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी और उस फॉर्मूला के लिए, तो उसको हम एग्जैक्ट लोकेशन करते हैं, इसलिए हम इतना ज्यादा इसको फोकस यहाँ पे नहीं लेके चल रहे। मैं एंड पर इस ये जब सारी चीजें खत्म होंगी तो इसके एंड पर उसको आइडेंटिफाई बता देती हूँ, फॉर्मूला को भी, मोड के लिए भी और मीडियन के लिए भी। लेकिन हमारा इतना मसला नहीं है, हम मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करके भी चल लेंगे, जो हमारे पास सेंट्रल क्लास आ रही होगी उसके साथ भी हम वर्किंग कर लेंगे। देन इज द मोड, दिस इज द थर्ड tool that is to be used. The mode is basically the most frequent or most popular value of the data set. ठीक है, यानी it is the observation that is most repeated in the data set. What we do is we calculate the mode by identifying the looking at the frequency of observations. The most repeated observations are the frequency of the by looking at the most repeated observation, we look at the frequency of the data set, and most repeated value is called as the mode of the data set. ठीक है, और अगर there are cases, there are situations when we have no value being repeated more than the all other observations, then we call it that we have no mode in the data set. There are cases when we may have two observations which are repeated more frequently than all other observations but still appear in the equal number of repetitions, then we call that we have two modes or bimodal data set. Similarly, if we have many observations which are more repeated than the remaining number of data set remaining observations, but still are repeated an equal number of time, then we call them such a data as a multi-model data set. So if we have only one mode in the data set, we call it as the unimodal distribution. If we have two modes, two most frequented or greatest frequency observations, then we call them as bimodal data set. If we have many observations with some greatest frequency, then such a data is called as a multi-modal data set. And in case of no repeated observation, we call it a data with no mode values. For calculation of mode, अब आप मुझे जरा क्विकली जल्दी से बताएंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, फॉर दिस डाटा सेट फाइंड द मोड ऑफ द signing bonuses of 8 NFL players for a specific year. The bonuses million of dollars are reported as 18, 14, 34, 10, 11.3, 10, 12.4 and 10. We can see here that 10 is the observation that is most repeated or repeated 3 times, and it is greater than all other repetition of observation. So we can call it as the mode of this data set is equals to 10. Similarly, now you answer. Find the mode of the number of coal employees per country for 10 selected counties in southwestern Pennsylvania. Now the observations are 110, 731, 1031, 84, 20, 118, 162, 1977, 103, 752. Yes. How many or which one is the mode here? No mode. No mode for this data set. Similarly, the data shows the number of licensed nuclear reactors in the United States for a recent 15 years time period. Find the mode here. We have 104, 104, 104, 104, 104 repeated for 5 times. Then we have 107 repeated 1 time. Then we have 109 as 1, 2, 3 and 4 times. Then we 5 times. Then we have 110, 111 twice and 112. So what about the mode? 109. 109, I think, and 104 both. 104 and 109? Yes, we have two modes here. That is, it's a bimodal distribution with 104 and 109 as the mode value. ठीक हो गई बात यहाँ तक की. Now we have the situation for the continuous structure, the group data or group frequency distribution here. हमारे पास अभी हम थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि आप मोड और मीडियन के बारे में हमको गाइड कर दें कि ग्रुप डाटा सेट में हम कैसे हैंडल करते हैं. So let's first have a look at the group data structure for the calculation of mode.
इन ग्रुप डाटा सेट हमारे पास एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट योर बुक इज नॉट कवरिंग दैट फॉर्मूला, so I have not used it here for explanation of the calculation of exact mode in a group frequency distribution. In spite of that, they have just used the location of modeled class over here. So what we do is we will be looking at the data set for the in form of frequency distribution, and we'll be identifying the class having the highest frequency here. That class is being labeled as the modeled class. That is, in this case, we have 20.5 to 25.5 as the class with the highest frequency. So I will be labeling it as the मॉडल क्लास। ठीक हुई बात यहाँ तक की। सिमिलरली हमारे पास जो है हम मोड एक ऐसी सिर्फ वाहिद चीज है जिसको हम अच्छा ऐसा करते हैं, पहले आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की और उसके बाद जो है ये कंटिन्यू करते हैं क्योंकि वी आर लेफ्ट विथ ओनली 2 more minutes। तो हमारे पास जो है कुछ देर के लिए हम इसके बाद भी 40 मिनट का एक अलग से दूसरा तीसरा सेशन भी होगा मिस। हम एक छोटा सा सेशन और ले लेंगे जहां पर मैं आपको ये कब इनको यूज करना है वो वाली बात बता दूंगी। 3:15 के बाद दूसरा भी तो है। ठीक है, तब अटेंडेंस भी लेंगे ना? हाँ, अटेंडेंस उसके साथ भी ले लूंगी। ठीक है, अभी हम कर ले ब्रेक। चलिए फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं अटेंडेंस जब हम अभी लास्ट सेशन में ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त फिर ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा अभी जल्दी से बता देती हूँ आपको मोड। हमने भी थोड़ी सी बात की थी मीन, मीडियन और मोड के यूज की। तो हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन और मीडियन जो था, यानी मीन और मीडियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा या क्वांटिटेटिव डाटा ही के लिए एप्लीकेबल है। एज वी हैव जस्ट सीन के वी वर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन सम असेंडिंग ऑर्डर, आइडेंटिफाइंग देयर center point for median, we were adding up the observation, dividing them by the number of values. So these two requires the quantitative